So welcome students. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है which of these functions are not bijective for this domain and this codomain. -1 से 1 to -1 to 1 में which of these four functions are not bijective. So we need to analyze each and every function and see which of the following are not bijective. Bijective का मतलब है 1 1 भी होना चाहिए, onto भी होना चाहिए. So you can easily draw the graph and see what is happening. So first, let us draw the graph of sine inverse x. So x -1 और 1 के बीच में है तो sine inverse x is always equal to x. So this is nothing but y is equal to x. So between -1 and 1. So -1 और 1 के बीच में, if you draw the graph of y is equal to x, so -1 और 1 के बीच में the whole codomain is covered. So 1 1 भी है, on to भी. So the first function sine inverse x is both 1 1 and on to in the interval -1 to 1, in the domain -1 to 1. So logic clear? Because as long as x lies in the domain of sine inverse, sine will cancel out sine inverse. So let's go to the second option. अब sine inverse of sin x. Sine inverse of sin x. Sine inverse आउटसाइड, साइन अंदर है. अब साइन इनवर्स ऑफ साइन कब कैंसिल होगा? व्हेन एक्स इज इन बिटवीन -π/2 एंड +π/2, दैट इज -1.57 से लेके +1.57 तक है, तो साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसिल. सो हमको दिया है दिस फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन -1 एंड +1. सो ऑब्वियसली -1 एंड +1 लाइज इन दिस इंटरवल. सो -1 से +1 के बीच में साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा. सो y क्या हो जाएगा? 2/π into x. So you can see that if x goes from -1 to 1, y goes from -2/π to +2/π. So can you see that the whole codomain is not being covered? क्योंकि codomain जो मेरा है -1 to 1 है, बट इसका रेंज जो है वो -0 point something से लेके +0 point something तक आएगा, क्योंकि π is 3.14. So the whole codomain is not being covered. So on to nahi hai. So this is not bijective. So let us go to a third option. Third option is signum x into log e power x. ln e power x. ठीक है? See ln e power x, क्योंकि बेस भी e है, so this will be x. Signum x क्या होगा? x पॉजिटिव है तो +1 है, x नेगेटिव है तो -1, and x 0 है तो 0. So what is this function? Plus x if x is greater than 0. 0 if x is equal to 0, क्योंकि सिग्नम x 0 हो जाएगा x 0 पे. x नेगेटिव है तो सिग्नम x -1 हो जाएगा, सो द फंक्शन इज -x. इसका ग्राफ कैसे होगा? -1 और +1 के बीच में. सो x ग्रेटर देन 0 में y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 में 0 है, x इक्वल टू लेस देन 0, if x is less than 0, y is equal to -x. It is something like this. So the graph is similar to the graph of mod x. Hence, the function is not 1 1. देखिए, अलग-अलग x के लिए we have same one. So this is not 1 1. So not bijective. So ये भी bijective नहीं है. So let us go to the third option. Third option भी similar है. x cube into signum x. X cube into signum x. So signum x is a piecewise defined function. So y is equal to x cube if x is greater than 0. x greater than 0 में signum x 1 हो जाएगा. 0 if x is equal to 0. x equal to 0 में signum 0 है, so 0 minus x cube if x is less than 0. इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो कैसा होगा? x equal to 0 पे 0 है, greater than 0 में x cube है, get graph like this, and x less than 0 में you have minus x cube. Normal x cube है तो ऐसा है, normal x cube है तो ऐसा है, minus x cube will go like this. So you can see that this function is not 1 1, क्योंकि this is not passing the horizontal line test. So this is also non-bijective. So options B, C and D are the right options for this question. Thank you.